Okay. Right. Okay. So, so this is what is fundamentally called propositional logic. So far what we have discussed is something which is called propositional logic. Okay, and you can see that very simple facts can be represented using propositional logic. Now we can have an advanced form of this, which is called the first order logic, which is represented by FOL. And the difference between propositional logic and FOL, which is the first order logic, is that here you have quantifiers. Okay, quantifiers are actually used, and there are two types of quantifiers. One is this represented by this symbol, which means, or which is another representation of saying that everyone. Okay, and this symbol which is representing that there exists someone. Okay, so it's actually someone representing someone. So if I'm saying that say all these books are owned by Shahid, then of course the representation which I've got here is not representing all books. So I have to use some sort of quantifier here in order to write down this. And if I say that all pencils that are present here are owned by someone, then I have to use these quantifiers. Otherwise I'll not be able to represent the logic. So the difference between propositional logic and the first order logic is that I have more representation power in order to uh, represent knowledge, and I can use some sort of quantifiers. For example, I'll write down a sentence which says that okay, and consider this to be small. I'll say that studies X AI leads to that X is wise. Okay, so this is a sentence which says that all those who study AI are wise, and this is another sentence could be that all whales are mammals. Okay, so this is again a representation that is being used here, and you can see that I'm using this quantifier here, and this quantifier is actually representing the part of the knowledge which says that all whales are basically mammals. So all is represented by this quantifier. Okay, similarly I can use the existential quantifiers, or existential quantifiers would mean that okay, uh, if okay, let me just write down a sentence and then you can make sense out of it. This is a symbol that there exists someone, and that there exists someone which is X, okay, who loves drinking Coke. Okay, so this sentence actually means that there exists some X or someone such that someone loves drinking Coke. Okay, so here we have this existential quantifier that we have got. Okay. Okay, so existential quantifiers and universal quantifiers. So when we use, along with this propositional logic, the one which we have discussed earlier, if we use these symbols that we have got, then these symbols would make this first order logic. Okay, and along with that, along with the predicates in first order logic, you also have functions. Okay, so that is something which you need to know. And then I mean, you can add complexity to these representations by having nested representations. Okay, for example, here is a sentence, and let's see that what this sentence is actually depicting. That for all X, for all Y,
we say that, okay, parent x comma y and male y implies that y is a son of x. Okay, so this is a sentence here which says that for all x and for all y, if x is the parent of y and y is male, then y is the son of x. Okay, so this is primarily a nested representation where you will find two quantifiers that are coming together. Okay, another example of this nested representation would be that there for all x there exists a y such that x loves y. Okay, so everyone loves someone. Okay, so that is what this sentence is actually representing. So here again you will see a nested representation. So this is a very simple sort of an introduction to the first order logic and the predicate logic. Our interest here is that if we are given some knowledge and we want to infer something from that knowledge, then one way of inferring something from the knowledge is to represent that knowledge in some form, and one way of representing that knowledge is using the first order logic. So you can represent the knowledge in the form of first order logic, and then you can apply some inferencing mechanisms. And let's see that what those inferencing mechanisms are, and how are these inferencing mechanisms applied. Okay, so let's just see that. Okay, so first of all, we'll discuss some inferencing rules. Okay, and then we'll see that how those inferencing rules are applied. Okay, so the first inference rule, and this is where the automated reasoning part actually comes in, and this is regarding the first order logic. Okay, so inferences in first order logic. Right. So if there are any questions, you can always raise hand, or you can write in the chat. अगर कोई question होगा, ठीक है जी. Right. तो सबसे पहला पॉइंट जो है वो है जो कि इन्फ्लुएंसिंग मैकेनिज्म में आता है, वो है यूनिट रेजोल्यूशन. ओके, यूनिट रेजोल्यूशन. ओके, तो यूनिट रेजोल्यूशन में ओके, so unit resolution kya hai? Unit resolution is this. So if I have, say, some fact for some symbol p, and we say that p or q, okay, and that is the rule that we have, and I know that q is not true, that q is false, then my inference out of this will be P. Okay, so if I know that this is true, and if I know that this is false, then my inference would be P, and I'll definitely know that P is true. Okay, so this is the rule that I've got, or this is the expression that I've got. This is something which is known to me, and this is the inference that I've got. This is what you call as unit resolution. Okay, then you have got another bit which is called the resolution. Okay, resolution is when I have got an expression, let's say this expression, and I have got another expression which is this, and I know okay, both of these expressions are true. So this is also true and this is also true. If both these expressions are true, then the inference that I get out of this particular resolution is that, of course, Q and not Q cannot be true at the same time. So either P is true or R is true. So my inference here would be P or R.
So this is my inference. So if this expression is to be true, then in order for both these expressions to be true, then Q here can't, Q and Q not here, if both of them are true, then that would be contradictory. Therefore, either P or R is true in this case. So this is what unit resolution would mean. So unit resolution में आपके पास एक expression है, and if you know the negation of that expression, there is an or connective between that, then the inferred would be P. अगर Q का पता है आपको कि Q true नहीं है तो फिर P definitely true है. और यहाँ पे अगर ये इस तरह की expression है, तो अगर आपको ये पता है कि ये दोनों expressions true हैं, तो उस सूरत में first expression में P और second expression में R, one of these would be true. The third type of resolution mechanism that is used is known as the modus phonemes. Okay, modus phoneme में implication है. अगर आपके पास एक expression है which is A to B and you know कि this is true, अगर आपको इस implication का पता है कि ये true है और इसके साथ आपको ये भी पता है कि A true है, तो ये भी आपको पता है कि A true है, so the inference that you get out of this is कि B is also true. Okay, so B is also true. So this is what you call as the modus phoneme. So ये तीन आपके पास inference rules हैं. एक unit resolution rule है, एक resolution rule है और एक modus phoneme rule है. ठीक है? And then there are other rules also, and I'll just list down those rules just to complete the discussion. एक है कि if A is true or B is also true, I can actually write it in this form. I can say A and B. That means that both of them are true. ठीक है. फिर एक चीज आप यूज कर सकते हैं which is double negation, and this would mean कि if D is doubly negated तो फिर D जो है वो true होगा. और फिर एक आखिरी चीज which is very simple. I mean all of these three are very simple, and that is कि अगर A and B true है, the whole expression is true, then I can simply write it down A or B. I mean, if one of them is true, then the whole expression will be true. So this is what the inferencing rules are. The different types of inferencing rules are there in case of first order logic. And the most important are these three that are there. So the unit resolution thing is very important. The resolution and the modus phoneme part is very important in order to infer. Okay. So let's just see that how this inferencing is actually done. Okay, so let's just see is inferencing को आप करते कैसे. Okay. Okay, in order to do this inferencing, I'll be discussing one method which is called resolution refutation or proof through refutation. Okay, refutation proofs. Okay, so you refute something, and then if a contradiction arises, then you say that okay, your refutation of that particular fact was wrong. Okay, so if I say that something doesn't exist, and if that generates a conflict, then I'll conclude that something which I concluded didn't exist actually exists. Okay, so this is what the refutation bit actually or the proof through refutation actually means. Okay, so in order to do proofs using refutation methodology, what you'll have to do is कि आपके पास जितनी भी first order logic में जितनी भी expressions हैं, you have to convert those expressions into CNF. CNF is the conjunctive normal form. Conjunctive normal form. So you convert this into conjunctive normal form. All the expressions are converted into conjunctive normal form. ठीक है? And the standard conjunctive normal form is कि उसमें आपके पास कोई implication नहीं होनी चाहिए. पहली चीज, आपकी expression के अंदर कोई implication नहीं होनी चाहिए. ठीक है? That means कि कंजंक्टिव नॉर्मल फॉर्म में कोई एक्सप्रेशन ऐसी नहीं होनी चाहिए जिसमें ये इम्प्लीकेशन का सिंबल आ रहा हो.
फिर कंजंक्टिव नॉर्मल फॉर्म में आपके पास देयर एग्जिस्ट का सिंबल नहीं होना चाहिए। आपके तमाम के तमाम वेरिएबल्स जो हैं, तमाम के तमाम वेरिएबल्स जो हैं उनमें ये क्वांटिफायर यूज होना चाहिए विच इज यूज फॉर एवरीवन। ओके, तो आपके पास इम्प्लीकेशन कोई नहीं होनी चाहिए आपकी एक्सप्रेशन के अंदर, एग्जिस्टेंशियल क्वांटिफायर कोई नहीं होना चाहिए, सिर्फ यूनिवर्सल क्वांटिफायर्स होने चाहिए। सो दिस इज द यूनिवर्सल क्वांटिफायर एंड दिस इज द एग्जिस्टेंशियल क्वांटिफायर। तो सिर्फ एग्जिस्टेंशियल क्वांटिफायर्स होने चाहिए। अगर तमाम वेरिएबल्स के ऊपर एग्जिस्टेंशियल क्वांटिफायर्स आ रहे हैं तो यू कैन इजीली ड्रॉप दिस, क्योंकि तमाम के साथ यूनिवर्सल क्वांटिफायर्स हैं, तो यू डोंट रियली नीड टू राइट दीज यूनिवर्सल क्वांटिफायर्स इन योर एक्सप्रेशन एट ऑल। और फिर आपकी जितनी भी एक्सप्रेशंस हैं, आपकी जितनी भी एक्सप्रेशन है उसमें और कनेक्टिव्स होना चाहिए, और कनेक्टिव्स एंड कनेक्टिव्स या निगेशन, ये सिंबल्स आपके पास होने चाहिए। ठीक है, सो यू हैव वन एक्सप्रेशन जिसमें और कनेक्टिव्स आएंगे एंड देन दैट कनेक्ट्स विद अनदर एक्सप्रेशन जिसमें और कनेक्टिव्स आएंगे, और इन दो एक्सप्रेशंस को आपस में एक एंड कनेक्टिव मिलाएगा। फॉर एग्जांपल, an example of conjunctive normal form is this. So I'll say that not P or Q or R. So this is one expression. So इसमें आप देख लें, इस एक्सप्रेशन में कोई implication नहीं है, कोई क्वांटिफायर नहीं है। ठीक है, ये एक आपके पास एक एक्सप्रेशन मौजूद है एंड दिस इज इन द कंजंक्टिव फॉर्म। अगर इसको मैं एक एंड कनेक्टिव के साथ एक और एक्सप्रेशन के साथ मिला दूं, फॉर एग्जांपल इसके साथ मिला दूं, so this is the conjunctive normal form. conjunctive normal form का मतलब ये है कि एक ये आपके पास एक्सप्रेशन है और एक ये आपके पास एक्सप्रेशन है। इस एक्सप्रेशन में आपके पास और कनेक्टिव्स हैं सारे, इस एक्सप्रेशन में भी और कनेक्टिव्स हैं, लेकिन ये दोनों एक्सप्रेशंस आपस में एंड कनेक्टिव से मिल रही हैं। इसमें कहीं इम्प्लीकेशन नहीं है, इसमें कहीं एग्जिस्टेंशियल क्वांटिफायर्स नहीं है। ठीक है, तो वो आपने अपनी एक्सप्रेशंस में से रिमूव करने। ठीक है, और उन एक्सप्रेशंस में से रिमूव करने के लिए आपने कुछ रूल्स जो हैं वो आपने याद रखने हैं, और वो रूल्स बड़े सिंपल रूल्स हैं। तो फॉर एग्जांपल, अगर आपने किसी भी एक्सप्रेशन को उसकी कंजंक्टिव नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट करना है, सीएनएफ में कन्वर्ट करना है, तो हियर आर द रूल्स। पहला रूल जो है वो ये है कि आप अपनी जितनी भी बाय कंडीशनल जो है ना उसमें एक्सप्रेशंस हैं, उन बाय कंडीशनल एक्सप्रेशंस को आप रिमूव कर दें। ठीक है, और बाय कंडीशनल एक्सप्रेशंस को आप रिमूव करेंगे तो फिर आपके पास ये फॉर्म आएंगे। सो इफ P implies Q and Q implies P, अगर ये आपके पास एक एक्सप्रेशन है तो आप ये बाय कंडीशनल है। ठीक है, P implies Q and Q implies P, तो आप इसको इस तरीके से लिख सकते हैं। ठीक है जी, एंड देन Q implies P, तो ये आपके पास एक बाय कंडीशनल को आपने यूनी कंडीशनल में दोनों कन्वर्ट कर दिए। अब इसमें अभी इम्प्लीकेशंस हैं, इम्प्लीकेशन साइन है, तो ये सीएनएफ फॉर्म में नहीं है, आपको इस इम्प्लीकेशन साइन को रिमूव करना है। और इस इम्प्लीकेशन साइन को रिमूव करने के लिए आपको सेकेंड स्टेप पे जाना पड़ेगा, विच इज रिमूव इम्प्लीकेशंस। अच्छा, और ये इम्प्लीकेशंस आप रिमूव कैसे करेंगे? इम्प्लीकेशन को रिमूव करने का जो तरीका है वो ये है कि इफ यू हैव लेट्स से P implies Q, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ। I mean, these are all rules that you should know. P implies Q is same as not P or Q. ठीक है, तो इसकी डेरिवेशन में ऑब्वियसली हम नहीं जाएंगे, लेकिन यू कैन इजीली डिराइव दिस। लेकिन सो दिस इज अ कन्वर्जन ऑफ इम्प्लीकेशन इनटू एन और कनेक्टिव। ठीक है, फिर इसके बाद आप डी मॉर्गन्स, इसमें और कन्वर्जन्स भी हैं। फॉर एग्जांपल डी मॉर्गन्स लॉ भी आप अप्लाई कर सकते हैं। डी मॉर्गन्स लॉ क्या कहता है? डी मॉर्गन्स लॉ ये कहता है कि अगर ये है आपके पास एक एक्सप्रेशन, तो इस एक्सप्रेशन को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, नॉट क्यू। ठीक है, तो और आपने देखा एंड में कन्वर्ट होगी, और मैंने ये नॉट को जो है आई हैव एक्चुअली टेकन इट इनसाइड द ब्रैकेट, और इफ आई टेकन इट इनसाइड द ब्रैकेट दिस कम्स आउट, राइट। अच्छा, सिमिलरली अगर आपके पास ये एक एक्सप्रेशन है, तो आई कैन राइट दिस एक्सप्रेशन एज दिस, राइट।
सो अगर मेरे पास डबल इम्प्लीकेशन है तो मैं उसको इसमें कन्वर्ट कर दूंगा, अगर मेरे पास इम्प्लीकेशन है तो उसको मैं इसमें कन्वर्ट कर दूंगा, अगर मेरे पास नॉट सिंबल आउटसाइड द ब्रैकेट है, आई विल टेक इट इनसाइड द ब्रैकेट। अब आप ये देखें कि ये नॉर्मल फॉर्म्स जो है ना ये आपस में ये कंजंक्टिव नॉर्मल फॉर्म की फॉर्म में आना शुरू होगा, ठीक है। देन आई कैन ऑल्सो अप्लाई डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ भी मैं अप्लाई कर सकता हूँ। व्हाट इज दिस डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ? डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ का मतलब ये है कि अगर मेरे पास कोई एक्सप्रेशन इस फॉर्म में है Q not R, this would become, I'll take this and inside and this would become P and Q or P and R. Okay, so this is what this distributive would mean, and the same could be applied for OR. Okay, अगर मेरे पास Q and R आ जाता है और अगर OR बाहर आता है तो I can apply this distributive law in this form. I can say that P or Q and P or R. और अगर आप ये फॉर्म देखें तो this form is conjunctive normal form. अच्छा, डबल निगेशन का हम पहले बता चुके हैं कि अगर डबल निगेशन आती है तो आप डबल निगेशन को रिमूव कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, एक चीज अब और है, एक चीज इसमें ये है कि आपके पास अगर आपके पास क्वांटिफायर्स हैं, ठीक है, तो फॉर एग्जांपल अगर आपके पास एक है इस तरह की फॉर्म कि नॉट ऑल एक्स पी, अगर ये मेरे पास कोई एक्सप्रेशन है, अब इसमें मैं निगेशन साइन को इनसाइड दिस यूनिवर्सल क्वांटिफायर लेके जाऊं, और अगर मैं इसको इनसाइड दिस निगेशन यूनिवर्सल क्वांटिफायर लेके जाता हूं तो दिस यूनिवर्सल क्वांटिफायर कन्वर्ट्स इनटू एग्जिस्टेंशियल क्वांटिफायर, सो दिस बिकम्स देयर एग्जिस्ट्स एक्स नॉट पी। सो दीज टू स्टेटमेंट्स आर इक्विवेलेंट, ये स्टेटमेंट और ये स्टेटमेंट इक्विवेलेंट है। तो जैसे मैंने नॉट को बिफोर आफ्टर द यूनिवर्सल क्वांटिफायर लेके जाता हूँ तो यूनिवर्सल क्वांटिफायर एग्जिस्टेंशियल क्वांटिफायर में कन्वर्ट हो जाता है, और इसी तरह अगर मेरे पास नॉट देयर एग्जिस्ट एन एक्स और आगे कोई भी एक्सप्रेशन है, अगर इसमें मैं नॉट को अंदर लेके जाऊंगा तो ये एग्जिस्टेंशियल क्वांटिफायर जो है ये यूनिवर्सल क्वांटिफायर में कन्वर्ट हो जाता है। ओके, दिस इज व्हाट हैपेंस। सो नाउ यू सी कि जो आपके एग्जिस्टेंशियल क्वांटिफायर्स हैं उनको मैं एलिमिनेट कर सकता हूँ, ठीक है, और उनको एलिमिनेट करने का तरीका भी है, एंड इफ देयर इज अ नॉट साइन हियर तो देन आई कैन, जब मैं नॉट को अंदर मूव करता हूँ तो एग्जिस्टेंशियल जो है वो यूनिवर्सल क्वांटिफायर्स में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। फिर इसकी और कुछ सिंप्लीफिकेशन प्रोसेसेस हैं, लेट्स जस्ट सी दो सिंप्लीफिकेशन प्रोसेसेस आल्सो। एक उसमें ये है कि if I have, let's say, if I have something of this form, something of this form which says that for all x मेरे पास कोई p है और there exists a y मेरे पास q है, so I can actually write it in this way that for all x there exists y p और q, ठीक है। तो मैंने अपने जो एग्जिस्टेंशियल क्वांटिफायर्स हैं और यूनिवर्सल क्वांटिफायर्स हैं उनको मैंने इकट्ठा कर दिया एक जगह। ओके, देयर आर few other things that I would like to mention before we move on to a very simple example of how this actually works, and और वो ये है कि हर यूनिवर्सल और एग्जिस्टेंशियल क्वांटिफायर के साथ जो आप वेरिएबल यूज कर रहे हैं वो डिस्टिंक्ट वेरिएबल होना चाहिए। फॉर एग्जांपल, मैं अगर ये एक्सप्रेशन लिखता हूँ कि देयर एग्जिस्ट्स एन एक्स सच दैट पी ऑफ एक्स एंड देयर एग्जिस्ट्स एन एक्स सच दैट क्यू ऑफ एक्स, अब ये एक्सप्रेशन जो है, दिस एक्सप्रेशन इज नॉट एन एक्सेप्टेबल एक्सप्रेशन, क्योंकि इस एग्जिस्टेंशियल क्वांटिफायर के साथ और इस एग्जिस्टेंशियल क्वांटिफायर के साथ एक ही वेरिएबल, so I'll have to differentiate between the two. So I can actually write it in this way,
and there exists a y such that. So हर existential quantifier के साथ मुझे एक नया variable use करना है, ठीक है. x and y could represent the same object, okay. x भी जो है वो let's say set of students को represent कर सकता है, y भी set of students को represent कर सकता है, लेकिन क्योंकि उनका predicate फर्क है तो इसलिए उनको मैं different variables से represent करूँगा. So x is a different set of students and y could be a different set of students. Or they could be the same set of students, but now different predicates are being applied, or functions are being applied on this. So this is really important that you need to understand कि इस सूरत में आपको इसको use करना. Okay, so let's take an example, ठीक है. And that example is that I'll take a very simple example ताकि चीजें जो हैं वो समझ आ जाए. Before I actually go, there are two so there are two questions. Let me just answer this first. The first is from Maham. Can there be an and in the individual expression itself or only between two expressions in a CNF? अच्छा, जो इंडिविजुअल एक्सप्रेशन के दरमियान एंड जो है वो कंजंक्टिव नॉर्मल फॉर्म में नॉर्मली नहीं लेते, लेकिन दो एक्सप्रेशंस के दरमियान एंड आता है, ठीक है. तो जो ब्रैकेट के अंदर एक्सप्रेशन है उसमें जनरली और ही आता है, ठीक है. अच्छा, और फिर जुहेब का एक क्वेश्चन है, सर वुड यू काइंडली अपलोड पिक्चर ऑफ द नोट्स यू आर मेकिंग राइट नाउ अलोंग विद द वीडियो. अच्छा, तो okay, I'll try to upload the notes, लेकिन जब वीडियो अपलोड कर दिए तो फिर शायद पता नहीं फिर नोट्स की जरूरत है या नहीं. Anyway, I'll try to do that, ठीक है. Okay, so let's take an example, very simple example. So my first example is that I want to prove that it's raining outside. Okay, a very simple example. So I write down a sentence. It says that if Hassan carries umbrella, okay, and it's humid, then it is raining. Okay, so this is a sentence. Let me just write it down using propositional or predicate logic, ठीक है. So I'll write it down. I'll represent umbrella with U. I'll represent humid with H, and I'll represent rain with R. And because this is only one person we are talking about, therefore we need not to write any quantifier here. I mean, without any quantifier, I could actually write it down. Though मैं इसको ज़्यादा complex अगर बनाना चाहूँ तो मैं बना सकता हूँ. So I can write it in this way, that among a set of students, Hassan is a student, and Hassan carries an umbrella, and it's humid outside. So then it's raining. So it's a complex form. I can write it down using this complex form also. But let's keep it simple. I mean, you need to understand the process first. So I'll say that, okay, if Hassan carries an umbrella and it's humid outside, तो फिर it rains. Okay, so this is the sentence, the first sentence. Okay, so the second sentence is, okay, right. The second sentence actually says, if it is humid outside, then Hassan carries umbrella. So, I mean, if it is humid, then Hassan carries umbrella. Okay, and I can write down this sentence as H implies U.
ओके, एज आई टोल्ड यू, मैं हसन को इसलिए मैंने इसमें ऐड कर रहा क्योंकि दैट वुड ऐड टू द कॉम्प्लेक्सिटी. तो लेट्स से कि मेरे पास ये दो सेंटेंसेस हैं, एंड व्हाट डू आई हैव टू प्रूव? आई हैव टू प्रूव कि इट्स रेनिंग, right? I have to prove that it's raining. So this is one sentence that I've got. So Hassan carries umbrella and it's humid. So इसका मतलब वो raining है. और दूसरा sentence ये है कि if it is humid, तो the person or Hassan carries umbrella. So these are the two sentences that I want to use in order to prove कि R is true. I want to prove that R is true. Okay, so this is true. I want to prove this is true. अब रेफ्यूटेशन में क्या होगा? रेफ्यूटेशन के थ्रू मैं बताना चाह रहा हूँ. रेफ्यूटेशन में मेरे पास सबसे पहले मैंने इसको कंजंक्टिव नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट करना, और कंजंक्टिव नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए एज आई टोल्ड यू इम्प्लीकेशंस आपको रिमूव करनी है. और इम्प्लीकेशन रिमूव करने का जो पहली एक्सप्रेशन है उसमें अगर मैं इम्प्लीकेशन को रिमूव करता हूँ तो पहली एक्सप्रेशन ये है, इसकी इम्प्लीकेशन को अगर मैं रिमूव करता हूँ तो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा U and H और R. So this is from that principle जो कि अभी हमने पहले स्टडी किया. ठीक है, पहले वाले को आप निगेट करें और के साथ जो इम्प्लीकेशन के बाद आ रहा है उसको उसके साथ कनेक्ट कर लें. तो दिस इज व्हाट इट कम्स डाउन टू. अच्छा, इज दिस द कंजंक्टिव नॉर्मल फॉर्म? नो, क्योंकि ब्रैकेट के बाहर निगेशन है, मुझे निगेशन को ब्रैकेट के अंदर लेके जाना है. जब मैं ब्रैकेट के अंदर निगेशन को लेके जाऊंगा तो व्हाट विल हैपन? दिस एक्सप्रेशन विल बिकम नॉट U और नॉट H और R. So, अब ये मेरे पास कंजंक्टिव नॉर्मल फॉर्म में आ गई. ठीक है जी. सो ये एक एक्सप्रेशन, रिमेंबर ये एक एक्सप्रेशन है जो कि कंजंक्टिव नॉर्मल फॉर्म में आ गई. सो दिस इज एक्सप्रेशन नंबर 1. लेट्स मूव ऑन टू एक्सप्रेशन नंबर 2. एक्सप्रेशन नंबर 2 इज H एंड U, और इसकी कंजंक्टिव नॉर्मल फॉर्म में अगर करता हूं तो नॉट H और U, ये मेरे पास आ जाएगी. ठीक है, और व्हाट डू आई हैव टू प्रूव? I have to prove, which will at number 3, that I have to prove that R is true. So अगर मैंने ये प्रूव करना है कि R true है, तो जैसे रेफ्यूटेशन प्रूफ में मैंने बताया था कि आप क्या करते हैं, आप इसकी नेगेशन में भी को भी एक्सप्रेशन के तौर पे ऐड करते थे. तो I'll add a fourth expression here, which will be not R. So this is the refutation that I have added. And this is what this proof actually requires. ये आपको ऐड करना पड़ेगा. ठीक है, और अगर इनको मैं जब आपस में रिजॉल्व करता हूं बाय अप्लाइंग दोज रेजोल्यूशन प्रिंसिपल्स, और अगर एंड पे मेरे पास एक एम्प्टी सेट आ जाता है, ठीक है, अगर एम्प्टी सेट आ जाता है तो दैट वुड मीन के माय कंजंक्चर के नॉट रेनिंग वाला जो है वो फॉल्स है. ओके, सो लेट्स सी कि ये कैसे हो. Let's just see in a while. Okay. Okay. So for that we have to draw a conjunctive a resolution tree. Okay, a resolution tree. So I'll take the first expression. The first expression in its conjunctive normal form. This is the first expression in its conjunctive normal form. और यहाँ पे दूसरी एक्सप्रेशन है इन इट्स कंजंक्टिव नॉर्मल फॉर्म. और अगर इन दोनों को if I just combine these two, okay, with an and here, तो through resolution principle देखें, if both these expressions are true, अगर ये दोनों expressions true हैं तो आपको याद होगा रेजोल्यूशन प्रिंसिपल क्या कहता है. रेजोल्यूशन प्रिंसिपल ये कहता है कि अगर एक एक्सप्रेशन में निगेशन आ रही है और दूसरी एक्सप्रेशन में उसी की ऑपोजिट आ रहा है तो फिर वो दोनों ड्रॉप हो जाएंगे. तो यहाँ पे इस एक्सप्रेशन में और इस एक्सप्रेशन में एक तरफ नॉट यू आ रहा है और दूसरी तरफ यू आ रहा है, और दरमियान में सारे कनेक्टिव्स जो हैं वो कंजंक्टिव वो आपके पास और कनेक्टिव्स हैं. ठीक है,
तो इसका जो एंड रिजल्ट होगा वो ये होगा कि u यहाँ से ड्रॉप हो जाएगा। इफ यू रिमेंबर कि हमने यूनिट रेजोल्यूशन में और रेजोल्यूशन जो इन्फ्रेंसिंग मैकेनिज्म था उसमें जो रेजोल्यूशन पार्ट किया था, I'll just write it down here, उसमें था कि if P and Q, ठीक है, और दूसरी एक्सप्रेशन मेरे पास P और R आ जाती है, अगर इन दोनों को मैं रिजॉल्व करता हूँ तो मेरे पास जो आंसर आएगा वो Q और R आ जाएगा, यहाँ से P और नॉट P ड्रॉप हो जाएगा, ठीक है। तो इसी तरह से यहाँ पे ये नॉट U और U ड्रॉप हो जाएगा और मेरे पास जो एक्सप्रेशन बचेगी वो एक्सप्रेशन ये बचेगी, राइट। सो ये मेरे पास एक्सप्रेशन इस सूरत में ये एक्सप्रेशन बचेगी। अच्छा, एंड इट सेज कि ये हमें पता है फ्रॉम द प्रीवियस एक्सप्रेशन कि इट्स ह्यूमिड, ओके। अच्छा एक चीज मैं बताना भूल गया कि एक चीज जो फैक्ट्स मैंने यहाँ पे ये जो मैंने फैक्ट्स बताए थे इसमें एक फैक्ट मैंने बताना मैं भूल गया हूँ, जो तीसरा फैक्ट है। एक तो ये एक्सप्रेशन था, एक ये एक्सप्रेशन था और एक तीसरा एक्सप्रेशन था, आई विल जस्ट राइट इट डाउन हियर, व्हिच सेज कि इट्स ह्यूमिड। इसका मतलब H जो है वो ट्रू है, दैट्स व्हाट वी नो। ओके, सो दिस इज द थर्ड एक्सप्रेशन। मेरे पास एक एक्सप्रेशन ये है, एक एक्सप्रेशन ये है और एक एक्सप्रेशन ये है, ठीक है। सो आई हैव गॉट, I'll just write it down here as 2a. Okay, I'll just write it down as 2a कि H is true, ठीक है। So this is the third expression that is present in my knowledge base. So it's humid, so I know कि it's humid, ठीक है। तो इसका मतलब H मेरे पास आएगा, so वो आप एक्सप्रेशन ऐड कर लें, वो मैं पहले भूल गया था। तो इफ यू ऐड दैट, और अब मेरे पास जो थर्ड एक्सप्रेशन थी वो ये थी कि इट्स ह्यूमिड। अगर इन दोनों को मैं रिजॉल्व करता हूँ, यहाँ पे यूनिट रेजोल्यूशन लगेगी और यूनिट रेजोल्यूशन लगने के बाद दिस कैंसल्स आउट विद दिस एंड आई एम लेफ्ट विद R। और अगर आपको याद हो कि मैंने क्या किया था, मैंने ये किया था कि मैंने नॉट R अपनी तरफ से इसमें ऐड किया था, तो मेरे पास जो फाइनल एक्सप्रेशन है वो नॉट R है। अगर इन दोनों को मैं रिजॉल्व करता हूँ, R एंड नॉट R कैन नॉट बी ट्रू एट द सेम टाइम, देयरफॉर आई एंड अप हैविंग an empty set, or I end up having a situation which is contradictory, therefore it's actually a false state। और ये false state किस वजह से हुई है? Because of this which I have added from my side। So this tells me कि ये जो मेरा conjuncture था कि it's not raining is false, therefore I can safely conclude it's raining, right? So this is what your refutation tree or resolution refutation tree would look like. Okay, so this is your refutation tree। Okay, so let me just repeat, थोड़ी सी चीजें शायद कॉम्प्लेक्स नजर आ रही हों, लेकिन it's not that complex। Let me just repeat this। सबसे पहले आपने क्या करना है कि your knowledge, whatever that knowledge is, you have to represent it in the form of expressions। फिर आप उन एक्सप्रेशंस को कंजंक्टिव नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। कंजंक्टिव नॉर्मल फॉर्म का मतलब ये है कि आपने तमाम इम्प्लीकेशंस को वहाँ से रिमूव करना है। आपने एग्जिस्टेंशियल और एग्जिस्टेंशियल क्वांटिफायर्स को रिमूव करना है, ठीक है। आपने तमाम के तमाम वेरिएबल्स को एक यूनिक नेम देना है और यूनिक सिंबल देना है, विच वुड प्राइमरीली refer or which would primarily attach to universal quantifiers, ठीक है। सो ये कंजंक्टिव नॉर्मल फॉर्म करने के बाद आपने जो चीज़ प्रूव करनी है उसकी निगेशन आप अपने नॉलेज में ऐड करेंगे, ठीक है। और फिर आप इन्फ्रेंसिंग मैकेनिज्म अप्लाई करके ये ट्री जनरेट करेंगे। सो सबसे पहले यहाँ पे, और इन्फ्रेंसिंग मैकेनिज्म्स में कौन से आपने मैकेनिज्म्स अप्लाई करने हैं, या यूनिट रेजोल्यूशन अप्लाई होगा, या डबल निगेशन अप्लाई होगा, या रेजोल्यूशन अप्लाई होगा, ठीक है।
इम्प्लीकेशन वाला जो मॉडस फोनीन्स वाला जो रेजोल्यूशन पार्ट है वो यहाँ पे अप्लाई नहीं हो रहा। उसकी रीज़न ये है कि आपके पास इम्प्लीकेशंस आप इन एक्सप्रेशंस के अंदर बिल्कुल नहीं है, ठीक है। आपने इम्प्लीकेशंस को रिमूव कर दिया और वो जो स्टेप्स थे जो कि इम्प्लीकेशन जो कि कंजंक्टिव नॉर्मल फॉर्म में आपने चीज़ों को कन्वर्ट करना है, वो स्टेप्स मैंने आपको पहले बता दिए, ठीक है। सो दिस वीडियो विल बी देयर अलॉन्ग विद सम हैंडआउट्स, so you can go through the handouts also, or then uh, you can also go through this video, and then I think it would be easier for you to understand how this type of reasoning is actually used. Now, this type of reasoning is actually used for automated reasoning and symbolic learning category में ये fall करती हैं, और इस तरह की रीजनिंग को जो है वो ज़्यादातर मैथमेटिकल प्रूफ्स के लिए भी यूज़ किया जाता है, लेकिन नेचुरल लैंग्वेज को रिप्रेजेंट करने के लिए भी ये इस तरह का मेथड जो है वो यूज़ होता है, ठीक है जी। Okay, so that's it for today from my side. If there are any questions, you can ask me, or if there is anything. Okay, so so this is the symbolic learning part. और एक इसमें क्वेश्चन ये है कि फजी किधर इनकॉर्पोरेट होता है और फजी इसमें कहाँ पे आता है। अच्छा, तो फजी के बारे में टुडे वी actually I'll just try to explain that bit today. अच्छा, लेकिन नहीं, इसमें जो है it's included. अच्छा नहीं, because we haven't covered fuzzy, therefore it will not be included in tomorrow's quiz, ठीक है। No, this level of depth is actually enough. I think इसमें जो steps आप conjunctive normal form में जो convert करने वाली जो बात है वो आपको I mean उस चीज़ की आपको practice करनी पड़ेगी। उसमें कुछ variations आ सकती हैं और कुछ complexity आ सकती है, लेकिन इससे ज़्यादा मेरा ख्याल है उसको आपको उसमें in depth जाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो as far as quiz वाली बात है, तो quiz में क्विज में ये चीज़ बिल्कुल होगी, और वो whenever this quiz happens, we'll actually you'll actually be tested upon that. I'll upload the recording immediately after the session ends. थोड़ा सा उसका होता है, थोड़ा सा टाइम लैग होता है, लेकिन I'll upload it on this YouTube channel, तो आप वहाँ से इसको आप देख सकते हैं। और कुछ हैंडआउट्स भी हैं और कुछ रेलेवेंट वो भी होंगे, पॉइंटर्स भी होंगे टू सम हैंडआउट्स, तो आप उनको भी देख लें। The example which we have gone through today is a simple example, लेकिन तमाम में प्रोसेस यही होगा, ठीक है। इसमें एक चीज़ सिर्फ देखने वाली है कि जब फंक्शंस आ जाते हैं तब आप क्या करते हैं, ठीक है। जब फंक्शंस आ जाते हैं तब क्या करते हैं, तो I'll very quickly explain कि जब फंक्शंस आते हैं तो फिर आप यूनिफिकेशन या प्रेडिकेट्स जब आ जाते हैं तो फिर आप उसमें इस तरह की यूनिफिकेशन कैसे करते हैं। ओके, सो I'll very quickly explain this ताकि वो चीज़ समझ में आ जाए। and then so let's say कि एक जगह मेरे पास आ जाता है p of x और दूसरी जगह मेरे पास आ जाता है p of y, ठीक है। और इन दोनों को मैंने यूनिफाई करना है और या इकट्ठा करना है। नाउ ये दोनों उसी वक्त इकट्ठे हो सकते हैं व्हेन आई रिप्लेस x विद y, ठीक है, और अदरवाइज, ठीक है। ये जो सिंबल यहाँ पे मैंने यहाँ पे दिया है y over x, दिस एक्चुअली मीन्स दैट you replace y with x,
Okay, so when you replace y with x, and if I combine this becomes p of x. ठीक है, तो जब प्रेडिकेट्स आ जाएंगे या फंक्शंस आ जाएंगे तो उस सूरत में आपको यहाँ पे रिप्लेसमेंट भी बतानी पड़ेगी कि अंडर व्हाट कंडीशन ये प्रेडिकेट्स आपस में इकट्ठे हो सकते हैं. ठीक है ना. तो उस सूरत में ये रिप्लेसमेंट, ये एक एडिशनल चीज़ है जो इस एग्जांपल में कवर नहीं हो रही. उसकी रीज़न ये है कि इस एग्जांपल के अंदर मेरे पास प्रेडिकेट्स नहीं थे. ठीक है, तो अगर मेरे पास कुछ प्रेडिकेट्स आ जाते हैं तो उस सूरत में, या मेरे पास कोई फंक्शंस आ जाते हैं तो उस सूरत में मुझे ये रिप्लेसमेंट भी साथ बतानी पड़ती है कि किस वेरिएबल को मैं किस से रिप्लेस करूँगा तो ये दोनों यूनिफाई होंगे. ठीक है, अदरवाइज ये यूनिफाई शायद ना हो सके. तो लेट्स से कि मेरे पास अगर एक एक्सप्रेशन आता है कि पी ऑफ एक्स और क्यू ऑफ वाई, और इसको मैं यूनिफाई करना चाहता हूँ पी ऑफ एक्स के साथ, पी ऑफ जी के साथ, लेट्स पी ऑफ जी के साथ. तो इस सूरत में जब मैं इसको यूनिफाई करूँगा तो पी आपस में यूनिफाई सिर्फ उसी वक्त हो सकते हैं या इकट्ठे उसी वक्त हो सकते हैं कि जब मैं x को वो z से रिप्लेस कर दूं या z को x से रिप्लेस कर दूं. ठीक है, तो मेरे पास जो नई एक्सप्रेशन मेरे पास आएगी वो या इस फॉर्म में आएगी डिपेंडिंग अपॉन कि मैं क्या उसको यूनिफाई क्या कर रहा हूं, और इस फॉर्म में आ सकती है. ठीक है, तो बोथ ऑफ देम आर पॉसिबल. ये कैसे किया है? ये सूरत में किया है कि मैंने इस केस में z को x से रिप्लेस कर दिया तो तब ये एक्सप्रेशन एक होगी, और इस केस में मैंने क्या किया, इस केस को मैंने x को z से रिप्लेस कर दिया. ठीक है, तो both of these replacements are possible. So this is primarily because z is being replaced by x, and this is possible when x is being replaced by z. तो ये एक इसमें इजाफी चीज़ है जो कि ज़्यादा कॉम्प्लेक्स एग्जांपल्स के अंदर आपको मिलेंगी. ठीक है, तो if you will go through the handouts which I'll provide with that, इस तरह की जो चीज़ें हैं they'll become clear. But I mean primarily if you understand this process, that should be enough I guess. ठीक है, और इसमें जो चीज़ें याद रखने वाली हैं वो मैंने आपको बता दी हैं. 2-3 चीज़ें याद रखने वाली हैं. एक ये है कि कंजंक्टिव नॉर्मल फॉर्म आपने कैसे डिराइव करनी है. ठीक है, वो आपको पता होना चाहिए. दूसरा ये है कि रिप्लेसमेंट्स जो खैर रिप्लेसमेंट्स तो बाद में आएंगी. दूसरा ये है कि आपके पास जो है वो यूनिट रेजोल्यूशन और रेजोल्यूशन प्रिंसिपल्स का आपको पता होना चाहिए कि वो किस तरीके से आपने अप्लाई करनी है. ठीक है, अगर ये दो चीज़ों का आपको पता है तो फिर आपके लिए ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी. हाँ, अगर प्रेडिकेट्स आ जाते हैं तो फिर आपको इस प्रोसेस को कहा जाता है यूनिफिकेशन प्रोसेस. ये जो प्रोसेस है ये दिस इज द यूनिफिकेशन प्रोसेस. आपको दो प्रेडिकेट्स को यूनिफाई करना है, और वो दोनों प्रेडिकेट्स यूनिफाई उसी वक्त हो सकते हैं जब उनके वेरिएबल सेम होंगे, अदरवाइज वो वेरिएबल यूनिफाई नहीं हो सकते. ठीक है, ओके. सो मे बी नेक्स्ट टाइम हम इसके ऊपर कुछ फर्दर बात कर लेंगे कि अगर एक मोर कॉम्प्लेक्स एग्जांपल देख लेंगे और फिर देखेंगे कि ये कैसे जो है वो काम करता है. राइट जी, राइट. सो इज देयर एनी क्वेश्चन? ठीक है, अगर if there isn't any question then we'll end our discussion today. जैसे मैंने आपको पहले भी बताया, if there are any issues you can always send me an email, write down an email, and और अगर कोई questions हैं तो आप मुझसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं. अगर कोई प्रॉब्लम्स हैं तो वो भी आप पूछ सकते हैं. if you are overloaded let me know, we will be quite flexible in changing the deadlines also, or we have been. तो इसलिए अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है, इंटरनेट कनेक्टिविटी के मसाइल हैं या किसी के कोई इंडिविजुअल इश्यूज हैं तो जस्ट लेट मी नो, we'll try to handle those issues इंशाल्लाह. ठीक है जी. So if there aren't any questions then we'll inshallah meet on Thursday.
and finalize our discussion. ठीक है जी, thank you very much. खुदा हाफिज़.